Good morning, welcome to BIOS. I am Subramanian Singh and you are watching online botany. Today's topic is kingdom fungi. Few people call it fungi, few fungi, it's fungi. So kingdom fungi को discussion करिया पूर्वरो just a recap जहाँ जहाँ पढ़ी थिले 2 kingdom classification by Linnaeus, 3 kingdom classification by Haeckel, 4 kingdom classification by Copeland, 5 kingdom classification by Whitaker. So 5 kingdom classification जेतले Whitaker देले से कौन कौन कहले? So kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. Okay, now when I am talking about fungi, what actually fungi is? घरे ब्रेड नहीं के आसिले किछि पीस लेफ्ट आउट हो गला बळी गला रोस्ट कलेनी टोस्ट कलेनी रखी देले 2 दिन पर ता ऊपर गोटे ब्लैक कलर लेयर फॉर्मेशन गला दैट इज फंगस काठ पड़ी कि रही बाहर ता धरे छतु फुटी जाय से छतु दैट इज फंगस मशरूम आमे खाउचे टेस्टी एंड हेल्दी फंगस पाळगदा थाए नडा गदा थाए गां मानकर जो माने रही चंदी देखि थिबे पाळगदा नडा गदा किछि वर्ष रही गला परे सेथिरे छतु फुटिवा आरंभ करे फंगस पखाळ भात को दिने दिन रखी देला परे खटा हो जाए ग्रोथ ऑफ फंगस सो ऑल दिस आर फंगस सो व्हाट इज फंगस सो फंगस आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर टिपिकली हेटेरोट्रॉप्स unicellular or multicellular form filaments clearly defined filaments close affinity to plants having cell wall but devoid of chloroplast and close affinity to animals being heterotroph but again this fungi is a large group and primarily जेतेबेले हमें classification start कले it was mostly considered as plants due to its growth pattern but later on in 1969 Whitaker says that they are neither related to plants nor related to animals they are an individual group hence in his 5 kingdom classification he proposed fungi as a separate kingdom. Today we will discuss about that only. So first of all we will study the general characteristics of fungi. What are the characters? What are the features that an organism should possess to keep it in the group kingdom fungi or identify it as a fungus? Come to the whiteboard. So here are the general characteristics. So primarily I have so many pens today. I will put one here. So primarily the first character is eukaryotes, non-vascular and non-motile. Now cell type जेतेबेले हमें कहूचे cell are basically of 2 types prokaryotic and eukaryotic and in kingdom of Monera kingdom को जेतेबेले हमें कहिले all the prokaryotes are coming under Monera and from Protista eukaryotes are being developed and Protista रे किए थिले ना unicellular eukaryotes. Now we are talking about kingdom fungi and here they are eukaryotes maybe multicellular or maybe unicellular but mostly multicellular eukaryotes multicellular and non-vascular type and non-motile they are mostly fixed जो जगह grow करंती सही रहंती movement is almost nil or movement is almost devoid in case of kingdom fungi. Coming to let me tick it out. So first point is over. Point number 2 they are unicellular or filamentous. Some of the fungi like yeast very common fungi जोटा हमें हमारा food रे भी use करूचे it's a helpful fungi it's economically very very important so that fungi is unicellular but there are again other fungus which are multicellular and form filaments. Now the third point is cell wall. Now this is a very very specific characteristic of fungi. Due to this character they have a rigid, a very strong cell wall.
very rigid, very firm, very hard cell wall. ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍ଗସ୍ ର ସ୍ପୋର କଥା ଆମେ କହିବା, the cell wall of the spores is so rigid that it can overcome the climatic hazards for years together. वर्ष वर्ष धरिकी ता भितर जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्वड होइकी थाए एवं फेवरेबल कंडीशन आसिले दैट स्पोर अगेन जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू फंगस कल्चर. So the cell wall is present, and here the cell wall is chitin type or fungal cellulose type. Chitin type or fungal cellulose type. Now coming to the fourth point, they are typically heterotrophs. They are typically heterotrophs, and this particular character, heterotroph, that separate them from plants. Now cell wall is a character that is very very specific to plants. Plant cells possess cell wall. प्लांट सेल रे सेल वॉल थाए. सेल वॉल थिले हमें ताको प्लांट बोली आइडेंटिफाई करि परिबा. दैट इज वेरी कॉमन कैरेक्टर. बट एठी प्लांट सेल कोन ना ऑटोट्रोफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस रे से माने फूड प्रोड्यूस करंती. व्हेयरएज दिस फंजी आर हेटेरोट्रोफ्स, दे आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल पिगमेंट नाही ता भितरे, तेणु से माने निज खाद्य निजे तैयारी करि पारंती नाही. दे आर टिपिकली हेटेरोट्रोफ्स, एंड दिस हेटेरोट्रोफ कैरेक्टर is we will discuss when we will discuss about the types. Okay, so the point number 5 is spore production. So what is spore production? This is unique to fungi. Spore production आमे प्रोटिस्टा रे भी देखिथिले, but प्रोटिस्टा spore थारू fungi spore are more developed, because in case of fungi a sporangium is formed, বা spore sac is formed, and ता भितर स्पोर डेवलप करे. से स्पोरटा हैप्लॉइड कंडीशन रे रहे, जदि इट इज नॉट ए प्योर सीड. आमे ताको सीड बोली कहि परिबा नाही, आमे ताको स्पोर कहूचे. इट्स हैप्लॉइड इन नेचर, बट ता भितर गोटे फंगस रो जेनेटिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिक मटेरियल स्टोर हे कि रहे, जा थारो नेक्स्ट जनरेशन रो फंजी डेवलप करे. The next point is store food in form of starch. Now मु जते बेले डिस्कशन करिबी तार अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेते बेले हमें देखिबा ता भितर माइसेलियम थाए. से जो फंगल बॉडी that is called as mycelium, that mycelium is made up of cells which are filled with starch, food material sufficient deposit थाए in form of starch. Now the seventh point is no seed or embryo. Now seed is specific to plants, to angiosperms, to be very very specific. सपुष्पक उद्भिद जा भितर सीड आमे देखिया पई पाऊ, and embryo is something जोटा गोटे एग भितर आमे देखू. बट इन केस ऑफ फंजी स्पोर्स आर प्रोड्यूस. एठी मु पॉइंट नंबर 5 रे कहितली स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, whereas no seed or embryo is found in case of kingdom fungi. Coming to the point number 8, produce pheromone for sexual reproduction. Now pheromone is something जेतबे तमे माने जूलॉजी पढिबो, you will come to know about sex hormones, जहा कि sexual reproduction रो characteristic को enhance करे. Those pheromone is present in fungi. So kingdom fungi is identified with these 8 characters. There are so many other characters, but these 8 are the basic and most important characters, and basing upon these 8 characters we can identify an organism to come under kingdom fungi. Clear? बुझिए गला. Now how many types of fungi are there? Fungi रो टाइप कौन? So fungi को आमे जते टाइप को डिवाइड करिया पय चाहूचे, हमें fungi रो गोटे कैरेक्टर नउचे कौन? Fungi are typically heterotrophs. They are typically heterotrophs. They cannot produce their food. They depend upon others
to have their food. But that dependency is again of three distinct category. Accordingly, as per their food habit, they are of three types. What are they? Back to the whiteboard. Types of fungi. So the first type is saprophytic fungus. Saprophytic fungus. What is saprophytic? Saprophytic कहले हमें कौन बुझू? Now जो एग्जांपल देइथिले काठ गड़ पड़ीथिला, ब्रेड रही जाइथिला, रुटी रही जाइथिला, ता ऊपर फंगस ग्रो करी गला. Now काठ गड़ जोटा सुखिला काठ थिला बा नड़ा थिला, पाଳ थिला बा ब्रेड थिला, what are they? They are dead or decaying matters. लिविंग ऑर्गेनिज्म रो डेथ होला परे ता भितरे जो सेलुलर मैटर्स अच्छी ता ऊपर जते बेले गोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो करे आमे ताको सैप्रोफाइटिक बोली कहू. So those fungus which grow on a dead organism, those fungus are called as saprophytic fungus, and the example, best example is penicillium. Best example is penicillium. Point number 2, parasitic fungus. What is parasitic fungus? Parasite माने कौन? Parasite word सहित हमें प्राय तो acquainted. Parasite को हमें परजीवी कहो. Isn't it? So parasite means when an organism grow on another living organism and make harm to the host. जेतेबेले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आउ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे ग्रो करे एवं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे ग्रो करे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाए आमे ताकू कहू पैरासाइटिक. So this parasitic fungi, the best example is Poxinia. The best example is Poxinia. Now the type 3 is symbiotic fungus. Now what is symbiosis? Symbiotic means the organism which obey the rule of symbiosis. What is rule of symbiosis? Now symbiosis is a unique character जोठी कौन हुए ना two living organisms live together in collaboration with each other. One may be depending upon the other for certain reason. दुईटा ऑर्गेनिज्म गोटे आउ गोटे कर बॉडी भितर रहुथिबो एवं जने आउ जन को हेल्प करुथिबो एंड प्रत्युत्तर रे प्रथम द्वितीय को हेल्प करुथिबो एवं द्वितीय प्रथम को हेल्प करुथिबो. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज लाइकेन, वेयर एज लाइकेन रे कोन थाए जानि छ पिला माने एठी थाए algae और एठी थाए fungi. Now this fungi is dependent upon algae for its food and never harms the algae in return. So these are the three types of fungi. Now बुझियला तो now we will go to the ultrastructure, how a fungi typically looks like. I will draw a small diagram here. Fungus are of various types. Their mycelium is so well developed, but we will discuss about the simple structure of fungus. Okay, so let me draw first. These are not roots, don't confuse. I'll tell you. Okay, so just a outline. Now this filamentous structure is called mycelium.
Okay, they are called mycelium, and these myceliums can be septate or aseptate. That means each cell may possess a single nucleus or may possess multiple nucleus. That is a separate thing that we will discuss in later case. ଯେତେବେଳେ ଆମେ classification ପଢିବା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ detail ku jiba. So this is mycelium, and these root like structures, they are called as hypha. They are not roots. Okay, now here this ball like structure, that is known as sporangium. And this sporangium, when ruptures, comes out the sporangiophores. Okay, so these sporangiophores are actually bear the genetic material for the next generation of fungi. So this is typically the ultrastructure of a fungus. So पिला माने आमे फंगस कौन जानिले, तार जनरल कैरेक्टर्स देखिले, टाइप देखिले एवं तार अल्ट्रास्ट्रक्चर देखिले. नाउ वी विल गो टू इट्स क्लासिफिकेशन. सो अल्ट्रास्ट्रक्चर देखिले, एबे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी. जो किंगडम फंजी कथा कहिले, नाउ दैट किंगडम फंजी हैज 3 सब किंगडम. कौन 3 सब किंगडम? फर्स्ट वन इज Gymnomycota, second is Oomycota, and the third one is Eumycota. Clear? Kingdom fungi has 3 sub-kingdom: Gymnomycota, Oomycota, and Eumycota. But recently, this sub-kingdom Gymnomycota is being shifted to kingdom Protista and no more included under fungi. Clear? आउ थरे कहूची, Gymnomycota जो किंगडम थिला फंजी अंडर रे तार क्लोज एफिनिटी प्रोटिस्टा सहित थिबा जोगु very specifically unicellular characters show करुथिबा जोगु that has been removed from the kingdom fungi and now included under kingdom Protista. But basically Gymnomycota is no more included under kingdom fungi, and now onwards kingdom fungi has only 2 sub kingdom. Now this is eta depend करे पिला माने क्वेश्चन कोन आसुची. जदी क्वेश्चन भितरे Gymnomycota, Oomycota आ Eumycota तीनटा जाक ऑप्शन रे अछि and तमको क्वेश्चन सेही भले अछि, then you have to choose that answer. Otherwise you will say kingdom fungi has 2 sub kingdom, Oomycota and Eumycota. Now Oomycota माने कोन? This is accepted and Eumycota are septate fungi. मने पड़ुची जेते हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कली सेते बेले कोन कली जे फिलामेंट भितरे आमे जो सेल देखुचे, जेते बेले सेल डिस्टिंक्ट हे कि थाए एवं ईच सेल भितरे गोटिए न्यूक्लियस थाए ताकू आमे कहिबा सेप्टेट. किंतु जेते बेले गोटे सेल भितरे मल्टीपल न्यूक्लियस थाए किंबा दीटा सेल भितरे साइटोप्लाज्म मिक्सअप है कि थाए, या साइटोप्लाज्म ता साइटोप्लाज्म कंप्लीटली सेपरेट नुहंती, सेते बेले आमे ताकू कहबा एसेप्टेड. क्लियर? सो जेतेबेले एसेप्टेड फिलामेंट देखुचे, जेतेबेले एसेप्टेड माइसिलियम देखुचे, सेतेबेले आमे ताकू ओमाइकोटा भितरे रखुचे. जेतेबेले माइसिलियम रे क्लियर फिलामेंट अछि एवं सेप्टेड माइसिलियम, सेतेबेले आमे ताकू एओमाइकोटा भितर को नेकी आसुचे. नाउ दिस ओमाइकोटा and Eumycota concept clear? Oomycota is divided into two class.
Phycomycetes and Zygomycetes. Eumycota is divided into 4 classes: Mycophycophyta, Deuteromycota, Ascomycota and Basidiomycota. Okay, so first एठी मो माइकोफाइकोफाइटा कथा कहिबी कारण आमे याकू एठू टिके अलग नबा एवं याकू गोटे सेपरेट क्लास रे पढिबा। ए जो माइकोफाइकोफाइटा कथा कहिले या भितरे दुटा वर्ड अछि देखा जाउछ क्लियरली, माइको एंड फाइको। माइको मीन्स व्हाट इज दिस? algae. So myco means algae, phyco is fungi, phyta means plant जानिचे। So mycophycophyta जते बेले कहूचे सेते बेले हमें कहूचे याकू ये हला कोन ना algae fungi combinedly। So जोटी algae fungi combinedly या पूर्वरु मु saprophytic parasitic आउ symbiotic कथा कहउतली सेते symbiotic रे मु कोन एग्जांपल देथिली lichen। So mycophycophycota is none other than lichen. Clear? So याको हमें छाड़ी दबा, याको हमें सेपरेट क्लास रे पढ़िबा। Now we will study Phycomycetes। मु अंडरलाइन कर दोची Phycomycetes, class Phycomycetes, class Zygomycetes, class Deuteromycota, Ascomycota and Basidiomycota. Deuteromycetes, Ascomycetes or Basidiomycetes. What are the general characteristics, features, short re kahiba, so that you can understand the entire kingdom easily. Okay, so first of all, Phycomycetes. Now Phycomycetes are, I will use a red pen here, they are aquatic fungi, means either they are growing on water surface or at a place where the water content is at a higher level. Damp places हेतिबो, संतसंदी जगह हेतिबो सेठी ग्रो करे, so they are aquatic fungi. Second is aseptate character कहि सारिची। Aseptate means cell to cell भितरे strict cell wall development ही परि नाही एवं each of the cell is sharing their cytoplasm with each other. Third one is cynocytic. Now what is cynocytic? Cynocytic means when a cell contain more than one nucleus, we call it as cynocytic. So Phycomycetes रो जो फिलामेंट थाए ता भितरे कौन थाए ना each cell एक रो अधिका न्यूक्लियस बियर करथांती। नेक्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Phycomycetes रे मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए एंड एठी कौन हुए ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा दीटा अलगा अलगा टाइप रो स्पोर रे हुए। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज जूस्पोर, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अप्लानोस्पोर। Now there is a very simple difference between zoospore and aplanospore. Zoospore it is zoo लागिची जूलॉजी माने टिके टिके अब भाबी बेरे जूलॉजी बोले काहे कि ना ए स्पोर कार गोटे कैरेक्टर देखा जाए, दे आर मोटाइल। These spores are motile means they can move from one place to another, whereas aplanospores are non-motile. Clear? Zoospores are motile, aplanospores are non-motile. Clear? So Phycomycetes ro characters पढ़िले, example is Albugo and Phytophthora. Albugo and Phytophthora. Coming to Zygomycetes. Okay, so here in case of Phycomycetes, the fungi is aquatic fungi, whereas Zygomycetes are terrestrial fungi. They are mostly found on land, dry land. Typically filamentous in nature, well developed filamentous, but again aseptate filaments. Cell wall contains chitin chitosan, जोटा गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर हला जाइगोमाइसिटिस रो, तार सेल वालटा वेरी वेरी रिजिड। जाइगोमाइसिटिस रे सेही कैटेगरी को ही रखा जायछि जो मानक स्पोर रे ना ए जो काइटिन काइटोसन जो
substances, Thai chemical substances. This is so hard that these spores can lay vacant for years together. वर्ष वर्ष धरिकी डाइवर्स कंडीशन रे एडवर्स कंडीशन रे स्पोर्टा डरमांट होई थाए एवं जते बेले फेवरेबल कंडीशन बाहरे जते बेले इजी अप्रोच पाए देन द स्पोर जर्मिनेट्स टू ए न्यू जनरेशन ऑफ फंजी. सो सेल ऑयल कंटेन काइटिन काइटोसान नो मोटिलिटी इन एंटायर लाइफ साइकिल. जो जाइगोमाइसिटिस रो जे कोनोसी स्पीसीज को हमें देखिबा तार एंटायर लाइफ साइकिल भितरे कोठी भी मोटिलिटी देखा जाए नहीं. व्हेरेज फाइकोमाइसिटिस रे स्पोर केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर केस रे जो स्पोर मोटिलिटी शो करे. Look at the differentiation. If you understand the differentiation, you can understand the topic easily. Okay, so in case of sexual reproduction, they are mostly by sporangiophores, and in case of sexual reproduction they are by gametangial copulation. Now gametangial copulation ethi kon hue real zygote formation hue nahi. Let me draw a small figure here so that you can understand. dita cell thanti ସେମାନେ परस्पर भितर डिफ्यूज करी जानती एवं सेल मैटर एक्सचेंज हो जाए एंड दे फॉर्म ए हैप्लॉइड स्पोर. बट सिंस गोटे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होची तेणु आम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहूचे. ओके, सो फाइकोमाइसिटिस ओवर, जाइगोमाइसिटिस इज कंप्लीट. नाउ वी विल गो टू यूमाइकोटा, माइकोफाइकोफाइटा कही सारी अलग क्लास रे पढ़ा. आम आसवा ड्यूटेरोमाइकोटा, आस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा को आम स्टार्ट करवा एपटू को पटू बेसिडियोमाइकोटा रु. व्हाई बेसिडियोमाइकोटा? नाउ बेसिडियोमाइकोटा इज मोस्टली ग्रो ऑन सॉइल like that of terrestrial, but they are mostly parasitic, they are mostly saprophytic, they are parasitic, and most are plant parasites like rots and smots. पत्रपोड़ा रोग पढ़ीच, that is blights भी पढ़ीच. all of them are fungal diseases. They are the Basidiomycota. Coming to Ascomycota, now Ascomycota are again like that of Oomycota, they are saprophytic in nature, whereas Basidiomycota is terrestrial but parasitic in nature. Okay, here Ascomycota is saprophytic in nature and Carpophilus means grow on dung. गोबर उपरे ग्रो करे, स्टूल रे ग्रो करे, so they are Carpophilus in nature. Example is Neurospora and Claviceps. Now coming to Deuteromycota or confusing fungi. This category of fungi are mostly has a close affinity towards the animals and plants rather to its own other sister concerns. Phycomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes और Basidiomycetes अपेक्षा Deuteromycota anamorphic fungi बोली कहा जाए. तार figure and characteristics are very much confusing to fungi. जनरल फंजी अपेक्षा बहुत डिफरेंट है, सो ताकू ट्रू फंजी बोली मध्य कहा जाए नहीं. यार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोनिडियोफोर क्रिएट हुए बा कोनिडिया सृष्टि हुए, एंड दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट किंगडम फंजी इनटू 5 डिस्टिंक्ट क्लासेस, whereas Mycophycophyta is kept separate as lichen. So this is all about fungi. मुझे आउ गोटे जिनस कहि किंगडम फंजी इज ए वेरी भास्ट चैप्टर. या गोटे क्लास भितर सारिबा बहुत कष्ट, बट आई ट्राइड माय बेस्ट सो दैट यू कैन गेट द appropriate things. Now coming to the conclusion, again request करिबी, if you are new to the channel please do subscribe it. If you like the video, if you like the lecture, then
press the like button and share with your friends. And mostly since आम +2 +3 रो सिलेबस को धरिक ही चलुचे, तो जदि निज पेरिफेरी भितर कहीं भी सही रेंज रो स्टूडेंट्स अछंती, डू शेयर विथ देम. इंस्टेंटली न हो पारे, इमीडिएटली न हो पारे, बट फ्यूचर केस रे इट विल हेल्प देम आउट. थैंक यू, हैव ए गुड डे.